Well, hello everyone, and welcome to the session. So, guys, this is the NABARD Grade A Phase 1 series for you where we are bringing live sessions for your practice. And I hope these sessions will give you the competitive edge that you need to crack this exam. So, first of all, guys, kindly do let me know in the chat box if I'm audible and if I'm visible to everyone. Just give me a thumbs up, give me a confirmation in the chat box, and then we shall begin. And I hope your preparations are going well. I hope you are doing everything that you need to prepare for. So just give me a confirmation, guys, if I'm audible and if I'm visible to everyone. And in the meantime, let you also tell you about our live quick revision batch. So we have recently launched a live quick revision batch where we'll be conducting 3 weeks of live classes on a daily basis. So in these 3 weeks, we'll be giving you uh, complete classes for your preparation for phase 1. Now in these 3 weeks, the total number of classes will be around 70 hours, and there is only a limited number of seats that is available. So if you want to join this batch, I think this is the right time. If you want to join us, you can avail an offer of 80% off on this course, and the coupon code is NABARD 80, right? All right, so that was the quick revision batch. Now in this batch, we are providing you live classes along with the handouts, PDF handouts, along with your test series, sectional test, full length test, along with your mock tests that are included in this course. So this is a one-stop solution if you have, if you want to revise, if you want to quickly brush up on your phase 1 subjects. So this could be a game changer for you. I know, Vladimir, that's why we are calling it a revision batch, right? So what is revision? Something that you have already done. Uh, all right, so we begin with the session. Let's see how receptive you are now. So guys, in this session, we'll be practicing questions which will basically look like your exam, the new pattern of questions that we have been seeing around in your RBI exam, in your IBPS exams as well. So I've brought, some new types of questions for you. So we'll take it as a mock test. One thing that you need to do is keep a track of your score. And at the end of the session, I'll ask you, what is your final score today? Right, we did another session like that last week, so this is another session on the same pattern. So we'll be taking it as a mock test. I'll be giving you 30 questions and we'll be solving them together here, right? So let's begin with the session, and please do mind, keep a track of your score. All right, guys, so first question in front of you. First is your close test. So first, let's read the directions first. A paragraph has been given with some blanks highlighted with alphabets in it. You are required to fill these blanks with the most suitable word given from the options, right? So how do we solve a close test, guys? Always remember, you have to first read it without the options, without the blanks. You just need to understand the context, and you need to understand the underlying tone of the paragraph. So first we understand that, that will help you to understand, that will help you to make your basically your choices, right? What choices to eliminate and what options to keep. And then see, you get a relative context, right? If it is an appreciative paragraph, it is apprehensive, if it is critical, right? So if it is just informative, so you need to understand that. So let's read the paragraph first, and then we'll start with the questions. The schedule for assembly elections in 5 states announced by the Election Commission of India on January 8 was along expected lines. Polling will begin in Uttar Pradesh on February 10 and end on March 7, 7 phases. The Manipur polls would be held in 2 phases and the Goa, Punjab and Uttarakhand polls in 1. Given the size of the states and dash of paramilitary forces, the ECI has dashed the polling into 7 phases this time, as in the 2017 assembly polls. In the UP elections, the ECI has dashed to its earlier pattern of starting with constituencies in the western part of the state first and then moving towards the east. Dash reports of Bharatiya Janata Party asking for the phases to be from east to west. Chief Election Commissioner Sushil Chandra said that the polls would be held from west to east and that no party had made a demand during the ECI's visit to UP in December to change this. So this is basically there is no criticism in this. So it's just a plain informative paragraph. It talks about the announcement of elections in the country. So let's choose. Right, so let's choose our options wisely and let's see what could be the right answer.
So let's start with blank number A. The schedule for assembly elections in 5 states announced by the ECI on January 8 was along the expected lines. Polling will begin in Uttar Pradesh on February 10 and end on March 7. Dash 7 phases. So your options are crossing 7 phases, spanning 7 phases, estimating 7 phases, lasting 7 phases, or none of the above. Yes, guys, kindly give me your options. A, B, C, D, E, whichever you think is the right answer. And guys, there is no judgment here. Nobody is testing you. This is for you, and I hope you will be true to yourself. Yes, guys. So polling will begin in Uttar Pradesh on February 10 and end on March 7. Dash 7 phases. Crossing 7 phases, spanning 7 phases, estimating 7 phases, lasting 7 phases. जब फेजेस में बात होती है ना, फेजेस का मतलब समझने का इसके एक एक करके 7 फेजेस में इलेक्शंस होंगे. सो पोलिंग विल बिगिन इन उत्तर प्रदेश ऑन February 10 एंड एंड ऑन March 7. नॉट क्रॉसिंग, क्रॉस होता है किसी से एक पार से उस पार जाना. एस्टिमेटिंग इज राउंडिंग अप, अप्रोक्सीमेशन. लास्टिंग इज कब तक वो एंड होगा, लेकिन वो उसने पहले ही बता दिया एंड ऑन March 7. सो इट शुड बी स्पैनिंग 7 फेजेस के 7 फेजेस में होने वाला है. सो इट वुड बी spanning 7 phases. That was blank number A. So let's move to the next question, guys. So polling will begin in Uttar Pradesh on February 10 and end on March 7, spanning 7 phases. The Manipur polls would be held in 2 phases and the Goa, Punjab and Uttarakhand polls in 1, given the size of the states and dash of paramilitary forces. Yes, guys, given the size of the states and dash of paramilitary forces, harbor of paramilitary forces, defilement of, deployment of, yeah, devilment of paramilitary forces. I think this should be fairly clear. So, given the size of the states and the deployment of paramilitary forces. Very well done, guys. So, given the size of the states and deployment of paramilitary forces, the ECI has dashed the polling into 7 phases this time. So, given the size of the states and deployment of paramilitary forces, the ECI has dashed the polling into 7 phases this time, as in 2017 assembly polls. So the next blank number C, guys. Yes, guys. So given the size of the states and deployment of paramilitary forces, the ECI has scattered the polling, split the polling, segment the polling, or bifurcate the polling. Guys, I want all of you to answer. This is for you. हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा तो बेशक छोड़ दो, लेकिन कोशिश करो यू ट्राई एवरी आंसर, बिकॉज उससे पता चलेगा वेयर डू वी स्टैंड टुडे एंड विच आर द एरियाज दैट वी नीड टू वर्क अपॉन. यस गाइस, व्हाट डू यू से? नहीं हिमांशु, नहीं अमित. बाइफरकेट, बाई का मतलब क्या होता है यार? 2 हिस्सों में बांटना. बाइफरकेट, डिवाइड. तो बाई हम कब यूज करते हैं? जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, याद रखना. बट अगर 2 से ज्यादा हो तो वी कैन नॉट यूज बाइफरकेट, राइट? सो थोड़ा सा वो लॉजिकल भी हमें होना पड़ेगा. सो द करेक्ट आंसर हेयर वाज स्प्लिट. द ECI हैज स्कैटर्ड, स्कैटर्ड होता है बिखेर देना. सेगमेंट, सेगमेंटेड होता तो मान सकता था, सेगमेंटेड, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी. सेगमेंट तो एक नाउन है, वो नहीं आ सकता. बाइफरकेट, अगेन आई टोल्ड यू, बाइफरकेशन इज डिवाइडिंग बिटवीन 2. सो द ECI हैज स्प्लिट द polling into 7 phases this time, as in 2017 polls. So चलो guys, यहाँ पे क्या आएगा? स्प्लिट. Blank number D. In the UP elections, the ECI has dashed to its earlier pattern of starting with the constituencies in the western part of the state first and then moving towards east. So, in the UP elections, the ECI has dashed to its earlier pattern. Stuck, jammed, bound, or adhered. Yes, guys. In the UP elections, the ECI has, Election Commission of India has dashed to its earlier pattern. Stuck, jammed, bound, or adhered. These are good questions, guys. This is the level of the exam that you are going to face in the paper. So this should be easy for you. हिमांशु, अब देखो आपको शायद प्रपोजिशन अभी अच्छे से करने की ज़रूरत है. अदेयर के साथ विद यूज होता है, ठीक है? यू हैव टू अदेयर विद द रूल्स. द करेक्ट आंसर हेयर इज नॉट अदेयर. अदेयर रूल्स से किया जाता है यार, ठीक है?
लेकिन यहाँ पे आएगा इन द यूपी इलेक्शंस द ईसीआई हैज स्टक टू इट्स अर्लियर पैटर्न के जो पिछली बार पैटर्न था उसी पैटर्न को इस बार वो रिपीट कर रहे हैं. स्टिक की थर्ड फॉर्म स्टिक मतलब उसी पैटर्न को व्हेन यू स्टिक टू समथिंग मतलब आप उसी को रिपीट कर रहे हो. सो द इन द यूपी इलेक्शंस द ईसीआई हैज स्टक टू इट्स earlier pattern of starting with the constituencies in the western part of the state and then moving towards the east. And last blank, blank number E, dash reports of the Bharatiya Janata Party asking for the phases to be from east to west. Chief Election Commissioner Sushil Chandra said that the polls would be held from west to east and that no party had made a demand during the ECI's visit. So dash reports of BJP asking for phases to be from east to west. Election Commissioner Sushil Chandra said. So dash reports of Bharatiya Janata Party, denigrating reports of Bharatiya Janata Party, expiring reports of Bharatiya Janata Party, dismissing reports of Bharatiya Janata Party, or trimming reports of Bharatiya Janata Party for phases to be from east to west. Very good, Nafis. Yes, guys, quickly. डेनिग्रेट होता है किसी को नीचा दिखाना. वाशिफ, आदित्य. डेनिग्रेट, डेनिग्रेट किसी को नीचा या किसी को बुरा बोलना. यहाँ पे वो बुरा बोलने की बात कर रहे हैं. वेरी गुड हिमांशु. Very good, Vladimir. Very good, Ria. It should be dismissing the reports, dismissing reports of the Bharatiya Janata Party asking for phases to be from east to west. Election Commissioner Chandra said the polls would be held from west to east, and that no party had made a demand. So dismissing reports of Janata, denigrating किसी के बारे में बुरा बोलना, expiring reports doesn't make sense. Trimming होता है किसी को cut short कर देना, but dismissing the reports means किसी की जो रिपोर्ट आ रही है उनको खारिज करना. सो खारिज करने को हम क्या बोलते हैं? टू डिसमिस अ रिपोर्ट और टू डिसमिस समथिंग. सो द करेक्ट आंसर है वो. मैं शुरू से पूरा रीड कर रहा हूँ तो गाइस जब एक बार आप अपने पांचों चॉइसेस फिल कर लेते हो ना, फिर एक बार उसको दोबारा पढ़ लिया करो अगर आपको टाइम बचता है तो. दैट विल गिव यू अ मोर यू नो more understanding कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो. So the schedule for assembly elections in 5 states announced by the ECI on January 8 were along the expected lines. Polling will begin in Uttar Pradesh on February 10 and end on March 17, spanning 7 phases. I think यहाँ पे क्या था? Spanning 7 phases. The Manipur polls would be held in 2 phases and the Goa, Punjab, Uttarakhand polls in 1. Given the size of the states and deployment of paramilitary forces, the ECI has dashed the polling, has see what were the options in C? Split. Huh? So the ECI has split the polling into 7 phases as in 17. In the UP elections, the ECI has stuck to its earlier pattern of starting with the constituency, this is this, and dismissing the reports of BJP asking for phases from west to east. Election Commission said this. Split can be in more than 2. Yes, Himanshu. स्प्लिट कैन बी, स्प्लिट 2 से ज़्यादा में होता है. स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में बांटना. स्प्लिटिंग अगर हम बोलते हैं ना स्प्लिटिंग इन हाफ, तब होता है कि 2 टुकड़ों में बांट दिया. ठीक है, जैसे ही स्प्लिट द बॉडी इन हाफ. स्प्लिटिंग इन हाफ मीन्स आधा आधा काट देना, लेकिन वैसे स्प्लिट करने का मतलब होता है टू स्प्लिट इनटू मोर देन 2 पीसेस, राइट. जबकि बाइफरकेट होता है लिटरली सिर्फ 2 के लिए, वो 2 से ज़्यादा के लिए नहीं, 2 से कम के लिए यूज़ नहीं होगा. Keep a track of your score. At the end, I'll ask you how many you got right and how many you got wrong. चलो guys, आगे बढ़ते हैं. Next question. So directions are in the questions given below. Parts of a sentence are given in shuffled manner. Arrange the parts in a meaningful order and mark the correct option as the answer. So आपको एक सेंटेंस को 5 पार्ट में उसने क्या किया है? शफल करके दिया और हमें उसको सही अरेंजमेंट में डालना है, लाइक वी डिड लास्ट टाइम. तो कम ऑन गाइस, लेट्स ट्राई इट अगेन. तो हमें फर्स्ट पार्ट ढूंढना होता है. इसमें क्या होता है गाइस? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको बस फर्स्ट ओपनिंग पार्ट मिल जाए. रेस्ट कैन बी कनेक्टेड. फॉर कंडक्टिंग फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक अप्रूवल, द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हैज़ गिवन हु हैव रिसीव्ड बोथ डोजेज ऑफ कोवैक्सीन एंड इंट्रानेजल बूस्टर डोज फॉर दोज हु हैव. हाँ, तो मतलब ई के बाद डी आएगा. ठीक है, हैज गिवन वैक्सीन अप्रूवल. हाँ, तो आई थिंक इट शुड बी. चलो मुझे तो मिल गया, अब आप बताओगे इस क्या होना चाहिए.
Yes guys, let's see if you can get it right or wrong. फर्स्ट पार्ट ढूंढना होता है बस इसमें आपको. Very well done guys. So it started with the Drugs Controller General of India has given, I think this should be one, has given vaccine manufacturer Bharat Biotech approval, this should be second, approval for conducting phase 3 clinical trials of, this should be 3, intranasal booster dose for those, this should be 4, for those who have received both doses of Covaxin. So this should be the correct sequence. It should be CBAED. So the correct answer here was option number B. Very well done, guys. Very good, Akshita. Very good, Nafis. Very good, Riya. Very good, Aditya. Saloni, Amit. Let's unite. Keep up the good work. Very good, Priya. वेरी गुड सौम्या. बट साथ साथ पहले आंसर करना है, ठीक है, मेरे बताने से पहले, उसके बाद नहीं. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपको समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चंस. नाउ अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आपको पढ़ना है और आपको मुझे बस आंसर देना है. सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. The South Delhi Municipal Corporation on Friday of the civic bodies waste to Wonder Park passed resolutions to construct the second phase of 46 crore and 51 crore respectively and the Bharat Darshan Park at an estimated cost of. अमित ये होता है. नफीस, लेट्स यूनाइट. मनोहर, जल्दीबाजी में जब आंसर करोगे ये प्रॉब्लम आती है. वही गलती तरुण ने भी की है, रोजा ने भी वही गलती की है. देखो गाइस, इतना जल्दी मत भागा करो, एक बार पूरा कर लो उसको, एक बार ऑप्शंस में देख के. फर्स्ट ऑब्वियसली वाज ए, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन ए से शुरू हो रहे हैं यार, तो यहीं से देख सकते थे हम. राइट, द साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एसडीएमसी ऑन फ्राइडे. देन इट शुड बी सी, पास रेजोल्यूशंस टू कंस्ट्रक्ट द सेकंड फेज. फिर आना चाहिए बी, second phase of the civic bodies ways to wonder park. That should be 3. Then it should be E, and the Bharat Darshan Park at an estimated cost. Then it should be D, estimated cost of 46 crore and 51 crore respectively. So the correct sequence should be A, then C, then B, then E, and then D. A C B E D. So the correct answer was option number A. ठीक है, सिर्फ आधे में ये गलती कर जाओगे आप. तो आधा करके प्रिया वही गलती कर, शायद हमने भी करी, कि आधा एक फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल गया तो उसको देखा ए सी बी किस किस में है, हाँ तो सी में लग रहा है. लेकिन पूरा भी किया करो उसको, एक बार पूरा पढ़ लिया करो पूरा सॉल्व करने के बाद, नहीं तो ऐसे गलती हो जाती है. मुझे पता है जल्दीबाजी में होगा ये गलतियां, डोंट डू दैट. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाफट से करके बताओ मुझे आंसर इसका.
वेरी गुड, नाउ दिस इज मच बेटर. नहीं अक्षिता, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. द फर्स्ट सेंटेंस वाज the Bihar Bandh called by some student bodies. So B should be the first sentence. So the Bihar Bandh called by some student bodies and supported by the opposition parties over irregularities. There should be second. Irregularities in the railway recruitment exam evoked a mixed response on Friday. Uh, with protesters disrupting movement of trains. There should be so with protesters disrupting movement of trains and vehicles in different parts of the state. So it should be B, E, A. I think we've got our answer, option C. So it should be B, E, A, then D, and then C. So that was the right answer. अच्छा, कोई बात नहीं. Then it's perfectly all right. All right, guys. So I hope you will be able to face such questions in the exams as well. So उसी की practice हम कर रहे हैं, तो exam में हमें ताकि problem ना आए. So let's try couple of more questions. So I want you to quickly solve this for me. Very good, Savan. Very good, Amit. Very good, Diksha. Very good, Riya. Very good, Shantini. Very good, Nafis. Keep up the good work, guys. Absolutely correct. Very good, Akshita. The first sentence was Maharashtra has topped India's list. Then it should be A in the number of MSMEs. So in Maharashtra has topped India's list in the number of MSMEs owned by entrepreneurs from the scheduled castes with as many as 96,805 enterprises. So D, A, E, C and B. So the correct answer was option number D. Very good, Neeraj, Roja, that's right. Very good, Vashiv. Very good, Saloni. Keep up the good work, guys. ठीक है. And one more question on the same. अब इसके बाद फिर मैं और इससे इसी का एक एडवांस्ड वर्जन लेके आऊंगा इसी क्वेश्चन का. अब वो भी अब इसके बाद हम ट्राई करके देखेंगे, बट एक बार ये वाला लास्ट वाला ट्राई करते हैं. वेरी गुड, सावन. फर्स्ट मिल जाए अगर आपको तो लास्ट वाला देख लो. लास्ट वाला अगर मिल जाता है उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा. वेरी गुड, लेट्स राइट. वेरी गुड, राम बाबू. वेरी गुड, नफीस. नहीं सौम्या, ये गलत हो गया. यस गाइस, क्विकली. वेरी गुड, वाशिव. वेरी गुड, रोजा. वेरी गुड, दीक्षा, रिया, मनोहर. वेरी वेल डन. Very good, Priya. Very good, Neeraj. So the first sentence was the Ministry of External Affairs, MEA, has said India. The first should be B. The Ministry of External Affairs has said India is monitoring the situation in eastern Ukraine. That should be second. Is monitoring the situation in eastern Ukraine. Where then it should be C, where a tense military situation has erupted after Russia placed a large number of troops and heavy weapons along Ukraine's frontiers, triggering worldwide fear of imminent military action. So the first sentence was B, second was E, third was C, fourth was A, and fifth was D. B, E, C, A, D. So option A was the right option. वेरी वेल डन गाइस. तो ये वाले जो रिप्लेसमेंट वाले ना, ये वाले में आपकी परफेक्शन हो जानी चाहिए, गलती नहीं हो, जल्दीबाजी में नहीं, बट एक मार्क यहाँ पे कहीं नहीं निकलना चाहिए इनमें से आपका. ठीक है. सो दे आर वेरी फेयरली इजी टू डू.
अगर आप प्रैक्टिस करो तो बड़े आराम से होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। बट अब इनका एक एडवांस वर्जन देखते हैं, ठीक है, आगे अभी दिखाऊंगा आपको, बट उससे पहले एक बार डबल फिलर्स वाले भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद टू ब्लैंक्स, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो आपको पूरा वो दोनों पेयर ढूंढना है, मतलब वो दोनों वर्ड्स ढूंढने हैं आपको जो इन दोनों ब्लैंक्स में फिट हो सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड देन चूज योर वर्ड्स वाइजली। द गवर्नमेंट्स फेलियर टू डैश टू द कोर्ट what logic had dash it to fix an annual income ceiling of rupees 8 lakhs for selection of economically weaker section had held up counseling for medical courses. So the government's failure to explain to the court, untangle to the court, play to the court, guide to the court, what logic had prompted it, raised it, induced it, dissolved it. प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस, नहीं प्रेपोजिशन से नहीं होता, बट प्रेपोजिशनल फ्रेज से हो सकता है। तो ऐसा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है इसमें। ग्रामर ऐसा नहीं होता कि ग्रामर में, आई गिव एन एग्जांपल कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो यार आधी सीख लो, आधी पेपर में आ जाएगी। लैंग्वेज है यार, वो सब्जेक्ट थोड़ी है, लेट्स यूनाइट, इट्स अ लैंग्वेज। अब आधी सीखी हुई मतलब वो नहीं आती है आपको, तो वो पूरा सीखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सर ये रूल्स बता दो, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट वाले रूल्स रूल्स थोड़ी आएंगे एग्जाम में, उनका एग्जीक्यूशन आएगा। एंड देयर आर काउंटलेस प्रेपोजिशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, ये कंजंक्शनल फ्रेज है, ठीक है, बिटवीन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो प्रेपोजिशन से सेंटेंस शुरू होते हैं, किसने कहा नहीं होते। हाउ टू प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस कंचन, यू कैन फाइंड देम ऑनलाइन, हर जगह मिल जाएंगे आपको, नॉट एन इशू, ठीक है। Yes, guys, very well done. The government's failure to explain, देखो हम एलिमिनेट कर सकते थे, what logic had raised it to, नहीं, dissolved it to doesn't make sense, induced हो सकता था, induce होता है, लेकिन play वहां पे गलत हो जाता है, तो we can eliminate these three options. So the right option was option number A. The government's failure to explain to the court what logic had prompted it to fix an annual income ceiling of rupees 8 lakhs for selection of EWS had held up counseling for medical courses. Very well done, guys. Keep it up. Next question. The Supreme Court on Friday dashed down a CBSE rule that said the marks dashed by students in their improvement exams would be final even if they had secured higher scores in the regular exams. So the Supreme Court on Friday dashed down a CBSE rule, plugged down, smite down, struck down, or punched down a CBSE rule that said the marks derived by the students, grabbed by the students, obtained by the students, or played by the students. Very well done, guys. Very good, Amit. Nafis, Savan, let's unite. Aditya, Jay Lakshmi, very good. Neeraj, Riya, Kanchan, very well done. Rajat, Priya, नहीं दीक्षा यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। नफीस वेरी गुड, रोजा, शांतनी वेरी वेल डन, वेरी गुड सैमुअल। सो द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड मनोहर, वेरी गुड सलोनी। The Supreme Court on Friday struck down a CBSE rule that said the marks obtained by the students, देखो प्लग डाउन कुछ नहीं होता, प्लग होता है किसी चीज को रोकना, स्माइट होता है किसी पे तमाचा जड़ना, ठीक है, या किसी को एकदम से मतलब, हाँ मतलब इस तरह से स्माइट, उसको एक तरह से जो ना झड़क देना, पंच्ड मुक्का मारना, डजंट मेक सेंस। तो स्ट्रक इज स्ट्राइक डाउन है सीबीएसई रूल के, उसको खारिज कर दिया है। दैट सेट द मार्क्स, अब सेकंड में आप कर सकते थे, डिराइव्ड होता है निकलना, ग्रैब्ड होता है एकदम से उसको दबोच लेना, प्लेड खेलना, लेकिन द राइट आंसर वाज ऑब्टेन्ड। तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन से क्लियर हो जाता है। So the Supreme Court on Friday struck down a CBSE rule that said marks obtained by students in their improvement exam would be final even if they had secured higher scores in their regular exam. Very well done, guys. Chalo, next question. Ethiopia's government says it will dash several prominent opposition figures as the country dash Orthodox Christmas. So Ethiopia's government says it will permit several prominent figures, free several prominent figures, spare several prominent figures, या lose several prominent figures as the country brings Orthodox Christmas, marks, spots or flex. Very well done, guys.
पता है गाइस, एक कहावत है कि नकल के लिए भी ना अकल चाहिए होती है, ठीक है? तो इशारा समझ जाना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। परमिट क्या होता है? परमिट किस चीज के लिए, परमिट परमिशन किस चीज के लिए देंगे प्रोमिनेंट फिगर्स को? क्या होगा? द इथोपियाज गवर्नमेंट सेज इट विल फ्री सेवरल प्रोमिनेंट ऑपोजिशन फिगर्स जिनको जेल में डाला हुआ है, एज द कंट्री मार्क्स ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। के जब कंट्री में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस बनाया जा रहा है, उस मौके पे इथोपिया की गवर्नमेंट ने कहा है इट विल फ्री सेवरल प्रोमिनेंट ऑपोजिशन फिगर्स। इट विल लूज, ढीला कर देंगे। नो स्पेयर, मतलब स्पेयर कर देंगे, मतलब बचा बचा हुआ छोड़ देंगे। परमिट किसी के परमिशन दे दें, और ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस क्रिसमस लाया नहीं जाता, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नफीस ने सही आंसर किया, रेस्ट ऑफ यू, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल होना है when you are choosing your options. So Ethiopia's government says it will free several, मतलब फ्री कर देंगे, आज़ाद कर देंगे बहुत सारे opposition leaders को. It will free several prominent leaders, opposition figures, as the country marks Orthodox Christmas, जो उसको celebrate कर रहे हैं, ठीक है? Next, question number 14. The Assam government on Friday dashed that unvaccinated people would be dashed from public spaces and transport. The Assam government on Friday publicized that, concealed that, suppressed that, announced that unvaccinated people would be barred from, secured from, reported from, or barred from public spaces and transport. I think this was fairly simple. Conceal होता है छुपाना, doesn't make sense. Suppress होता है दबाना, डजंट मेक सेंस। तो यहाँ पे बचते पब्लिसाइज्ड या अनाउंस्ड, वो हो सकते थे, लेकिन आगे बेयर्ड होता है, बेयर्ड कुछ नहीं होता, बेयर होता है खाली हाथ, बार्ड होता है जब उनको हटा दिया जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर डी। द असम गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट अनवैक्सीनेटेड पीपल वुड बी बार्ड फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस एंड ट्रांसपोर्ट। एग्जैक्टली। चलो गाइस, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। द ह्यूमन राइट्स ग्रुप डैश अ ह्यूज ब्लो आफ्टर द कोर्ट डैश टू ग्रांट बेल टू अ राइट्स एक्टिविस्ट। राइट, अच्छा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ठीक है। द ह्यूमन राइट्स ग्रुप डैश अ ह्यूज ब्लो आफ्टर द कोर्ट डैश टू ग्रांट बेल to an activist. So the human rights group suffered a huge blow, granted a huge blow, invaded a huge blow, या violated a huge blow after the court refused to grant bail, diffused to grant bail, poised to grant bail, or alleged to grant bail. Very good, Shaban. Very good, Nafis, Amit, Kanchan, Neeraj. That's unite. Aditya, Roja, very well done. The human rights group suffered a huge blow, granted a huge blow. नहीं, मतलब बहुत बड़ा उनको झटका लगा। इन्वेडेड, मतलब किसी पे कब्जा करना, नहीं। वॉयलेटेड, नहीं। यही सब ऑप्शन आपके क्लियर हो जाते थे। तो द ह्यूमन राइट्स ग्रुप सफर्ड a huge blow after the court refused to grant bail to a rights activist. Very well done, guys. So guys, are you keeping track of your score? 15 questions हो चुके हैं, तो प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ योर स्कोर। एट द एंड ऑफ द सेशन आई आस्क यू कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए, एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेयर डू वी स्टैंड टुडे, आज हम कहाँ पे खड़े हैं, एंड किन फोकस एरियाज है जो हमें प्रायोरिटी पे करने हैं अब इसके बाद, राइट? सो कीप ए ट्रैक ऑफ योर स्कोर गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन। अब इसमें देखना है ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे करना है इनको। अब इनमें क्वेश्चंस में क्या है, एक तो जो सेंटेंस को ए बी सी डी जैसे हम पहले कर रहे थे अप टिल क्वेश्चन नंबर 10, इनमें क्या है कि एक सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ए बी सी डी, और वो शफल्ड है। उनको हमें एक तो रीशफल करना है, और दूसरा एक ब्लैंक भी दिया हुआ है, और उस ब्लैंक में क्या वर्ड फिट होना चाहिए वो भी हमें यहाँ पे ढूंढना है, राइट? So the questions given below have sentences which have been divided into 5 parts which are not in their proper order. One of these parts also has a blank in it. You are required to rearrange the given parts and choose the option that carries the correct sequence and the word that fills the blank respectively. तो अब ऐसे ही हमें रीअरेंज भी करना है और ब्लैंक को भी फिल करना है। दैट आर मेड विद डैश एंड सेक्शन 295 punishes only insults to religion. The Supreme Court has laid down that unwittingly or without malice is not an offense. Malicious intention and anything said. Yes, guys. So I think first हमें मिल गया. C is the first part. The Supreme Court has laid down that
Section 295A punishes only insults to religion that are made with dash and, अब ये हमें समझ आ रहा है डैश एंड, यहाँ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ तक, तो हम यहाँ से बिल्डअप कर सकते हैं, तो सी बी ए राइट, दैट आर मेड विद डेलिब्रेट एंड malicious intent. So I think that should be fourth. So that are made with deliberate and malicious intent, and anything said unwittingly or without malice is not an offense. So that is the correct sequence. So I think all of you are correct. Option B is the right option. Keep it up, guys. तो अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें. अब इन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं, अब देखते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली गाइस. ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको पढ़ना है और आपको सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताना है. Very good, Savan. Very good, Nafis. Very good, Amit. Satya, Kanchan, Shantini, Diksha, Priya. Very well done, guys. Keep it up. Very well done. Very good, Neeraj. Very good, Roja. The first sentence was A, definitely. They could have created a small. Then second is they could have created a small film where the queen meets some. Then it should be some dash Bengali comic character like Handa Bhoda or Jatayu, and they offer her a jubilee संदेश. सो ए डी ए डी ई कहीं पे है, ये रहा. So yes, beloved Bengali comic character. So that's how things will fall into place. So they could have created a small film where the queen meets some beloved Bengali character like Handa Tayu, and they offer her a jubilee sandesh. Very well done, guys. Very good, Riya. Very good, Tarun. Keep it up, guys. Next question. चलो फटाफट से. They had been dashed through face-to-face teaching, made almost all students stay back at and learning programs in their schools, school closures during the pandemic in our country, home foregoing the learning that. Very good, Satya. एक बार दोबारा चेक कर लो सत्या एक बार. वेरी गुड नफीस. वेरी गुड कंचन, सावन, आदित्य, अमित. वेरी वेल डन. वेरी गुड रोजा. सिर्फ पहला मिलने से आंसर नहीं मिलता सत्या, वो पूरा भी पढ़ना है. जो आपने ऑप्शन चूज कर लिया, एक बार उस सीक्वेंस में एक बार सेंटेंस को पढ़ के तो देख लो. Very good, Yashwant, Riya, Diksha. Very well done, guys. The first is school closures during the pandemic in our country. Then it should be B, made almost all students stay back at home. हाँ, ये मुझे कनेक्टिंग दिख रहा था यहाँ पे ना. तो school closures during the pandemic in our country made almost all students stay back at home, foregoing the learning that they had been acquiring. सो फॉर गोइंग मतलब वो भूल गए जो फेस टू फेस लर्निंग कर रहे थे स्कूल में. सो दे वर मेड टू ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स स्टे बैक एट होम फॉर गोइंग द लर्निंग दैट दे हैड बीन इंक्वायरिंग थ्रू फेस टू फेस टीचिंग and learning programs in their through face to face teaching and learning programs in their school. So the correct sequence was option number A. Right? Chalo, one more question on this. Now guys, quickly solve it for me. Near complete baby woolly mammoth of Canada's far north have up the mummified remains of a made a rare discovery dash miners in the Klondike gold fields.
Very good, Nafis. Very good, Savan. Very good, Aditya. Absolutely correct, Saloni. Satya. Very good, Vladimir. Very good, Amit. Very good, Divyanshu. Very good, let's unite. Very well done, guys. The first sentence was miners in the Klondike gold fields of Canada's far north have then made a rare discovery. Then it should be D. Made a rare discovery. So यहाँ से हमें मिल जाता है E से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा था ऑप्शन नंबर डी. सो यहाँ से हम देख सकते थे. तो अब यहाँ से पूरा सेंटेंस बन जाता है माइनर्स in the Klondike goldfields of Canada's far north have made a rare discovery, digging up the mummified remains of, then it should be next, digging up the mummified remains of a near complete baby woolly mammoth. So that is the right answer. Very good, Riya. Very good, Santini, Roja. Very well done, guys. Keep it up. चलो तो 20 क्वेश्चंस हो गए. अब कुछ और नए तरह के क्वेश्चंस करते हैं. अब यहाँ पे देखना गाइस एक नया तरह का न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन टू यू. अब यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं PQRS वाले. सो इसमें देखना क्या है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. अच्छा, एक सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड दीज पार्ट्स आर गिवन इन जम्बल्ड फॉर्म. आउट ऑफ दीज पार्ट्स वन पार्ट इज फिक्स्ड विच हैज बीन हाईलाइटेड इन बोल्ड. अच्छा, तो एक सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है. नाउ दीज पार्ट्स आर गिवन इन जम्बल्ड फॉर्म. अब आउट ऑफ दीज पार्ट्स वन पार्ट इज फिक्स्ड व्हिच हैज बीन हाइलाइटेड इन बोल्ड. ये जो बोल्ड वाला है ना, इस क्यू वाला जैसे यहाँ पे है, ये फिक्स्ड है. मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती. यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द रिमेनिंग पार्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट एंड कोहेरेंट. मतलब अगर हमें PQRST ये बनाना है तो हम ये बोल्ड वाले को कहीं मूव नहीं कर सकते. ये सेकंड नंबर पे ही रहेगा. बाकियों को हमें रीशफल करके सही सीक्वेंस बनाना है. तो बताइए गाइस, यहाँ पे क्या सही सीक्वेंस बनता है. वेरी गुड रोजा. वेरी गुड नफीस. नहीं प्रिया, गलत हो गया ये. लेट्स यूनाइट. वेरी गुड नफीस. वेरी गुड. आई एम गुड डियर. हाउ आर यू? हाउ आर द प्रिपरेशंस कमिंग अलोंग? नहीं आदित्य, ये गलत हो गया. सॉरी. तरुण. वेरी गुड. यस गाइस. नहीं कंचन, गलत हो गया है. देखो, keeping pace with China, the Indian army, this should be the first sentence, Indian army is giving a boost to its communication. तो हमें समझ आ गया कि R से शुरू हो रहा है. अब R से दो ही ऑप्शन है, B या D. R क्यों हो गया, अब ये देखने. इसके बाद P आना चाहिए या S आना चाहिए, हमें अपना आंसर मिल जाएगा. राइट. सो कीपिंग पेस विद चाइना, द इंडियन आर्मी इज गिविंग बूस्ट टू इट्स कम्युनिकेशन नेटवर्क इवन एट हाइट्स ऑफ अप टू 18,000 फीट. या तो P, ठीक है, या फिर S, गिविंग बूस्ट इट्स कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर in remote high altitude areas looking to have 4G and 5G network even up at the heights of 18,000 feet. Yes. So क्या होना चाहिए? Keeping pace with China, the Indian army is giving boost to its communication infrastructure in remote high altitude areas looking to have 4G and 5G network even at heights up to 18,000 feet. ये बनता है सही सीक्वेंस. तो RQSTP. तो D is the right answer. ठीक है. सो इस तरह से पूरा उसको सॉल्व करना होता है गाइस. एक दो ऑप्शंस में ऐसे जल्दीबाजी में गलती मत कर जाना. राइट. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व मोर सच क्वेश्चंस. समझ आ गया सबको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो अब जैसे फिक्स कर दे, एस जो सेंटेंस है वो फिक्स है 4th नंबर पे, आप उसको मूव नहीं कर सकते. बाकी सारी को आपको रीशफल करके एक सेंटेंस बनाना है. तो गो फॉर इट गाइस. क्विकली गिव मी योर आंसर. Very good Nafis, very good Amit, very good Tarun, very good Krishna.
वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड कंचन, वेरी गुड यशवंत। हाँ, ई ऑप्शन लिखना चाह रहे हो रोजा शायद, हाँ वेरी गुड, वेरी वेल डन गाइस। द फर्स्ट सेंटेंस शुड बी द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड, then it should be a batch of petitions by private tour operators, then it should be seeking exemption from GST for, ये फोर्थ पे फिक्स है ही, seeking exemption from GST for the Hajj and Umrah services offered by them to pilgrims. So it should be TPQSR. TPQSR. So E is the correct answer. Very well done, guys. Very good, Shantini. Very good, Aditya. Riya, Satya. Very good, Priya. Very good. Let's unite. Keep it up, guys. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करके दिखा दो फिर मुझे इसी तरह से। लास्ट सेंटेंस इज फिक्स्ड, आपको ऊपर वाले चारों रीशफल करना है। क्विकली गाइस, गो फॉर इट। वेरी गुड नफीस, वेरी गुड टोरोलिक, वेरी गुड अमित, अच्छा शुभम, सॉरी नाम इतना, वो स्किप, वो ऐसा नाम रखते हो ना कोई पहचान ना पाए। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड सावन, प्रशांत, वेरी गुड कंचन, रिया, रोजा, वेरी गुड कृष्णा, शांतनी, आदित्य, दीक्षा, Tarun, Satya, let's unite. Very well done, guys. So, all of you have got it right that Maharashtra Anti-Terrorism Squad has arrested a 30-year-old man with alleged links to terror outfit Babbar Khalsa from a jail in Punjab. So, PRSQT. So, option A is your correct answer. Very good, Karthik. Keep it up, guys. Chalo. Another question on the same pattern. सेंटेंस नंबर आर इज फिक्स्ड ऑन नंबर 3, ये फिक्स्ड है, अब आपको बाकी सबको रीशफल करना है। मुझे तो आंसर मिल गया गाइस। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड तरुण, वेरी गुड श्रावण, वेरी गुड अमित, वेरी गुड सत्या, नहीं सौम्या, गलत हो गया ये वाला। वेरी गुड नफीस, वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड रोजा, नहीं लेट्स यूनाइट, ये गलत हो गया। वेरी वेल डन रिया, वेरी गुड यशवंत। सो गाइस व्हाट शुड बी द राइट सीक्वेंस? India informed the Bombay High Court. India informed the Bombay High Court that it will take steps in accordance with law under the Public Premises Act against its employees to whom it has issued eviction notice to vacate their official quarters at Kalina. So QTRPS, मुझे ये पता लग गया था कि एस लास्ट है, तो मैंने बस वो देखा था एस किस में है लास्ट में, वो एक में ही था, एंड यू कुड गेट टू द कंक्लूजन योर आंसर राइट। तो थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस करोगे इस तरह से तो यू विल डेवलप योर ओन शॉर्टकट स्ट्रैटेजीज के कैसे फटाफट से ढूंढना है। फर्स्ट मिल गए, हमें देख रहे हैं क्यू से दो शुरू हो रहे हैं, एक पी से है, एक टी से है, एक एस से है, तो इट्स आई एम नॉट श्योर किससे शुरू हो रहा है। फर्स्ट मिल गया क्यू, तो क्यू से अब हमें पता लग गया कि दो ही ऑप्शन बचते हैं, बी एस सी। लास्ट पता लग गया कौन सा है, एस, बी इज माई आंसर। ठीक है, तो ये 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है बस ये। एंड इफ यू प्रैक्टिस देम वेल, आई थिंक आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे इनमें। ठीक है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, आई हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम यू। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस पैटर्न, फटाफट से करके बताओ। द फर्स्ट सेंटेंस इज फिक्स्ड, आपको बाकी सारे रीशफल करने हैं। क्विकली गाइस, गो फॉर इट।
वेरी वेल डन गाइस. सो पी और कंफ्यूजिंग हो गया ये वाला ना, बहुत अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं मुझे. So ये क्या होना चाहिए guys? The Bombay High Court, while hearing a petition regarding the obstruction due to high-rise buildings around the Mumbai airport, discussed the recently released movie Runway 34 to understand how the air traffic really works. ठीक है, अब ये क्यों नहीं आ सकता कि सर ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. रिगार्डिंग हाउ द एयर ट्रैफिक रियली वर्क्स अराउंड द मुंबई एयरपोर्ट. एयर ट्रैफिक मुंबई एयरपोर्ट के आसपास कैसे काम करता है वो नहीं देखना था, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हाई कोर्ट ने वो हियरिंग किया था. So problem is not with the air traffic, it's with the obstruction due to high-rise building. So the correct answer was P R T P R T. हाँ जी, Q S. हाँ, so option C was the correct answer. Right? Very well done, guys. ठीक हुआ, कोई बात नहीं, ठीक हुआ, अच्छा है, गलत हुआ कोई बात नहीं, विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. ठीक है, सो डोंट वरी, ये होता रहता है. विल लर्न कि यार गलतियां हो जाती हैं, जल्दीबाजी में होती हैं गलतियां, बट बी केयरफुल. वो कई बार इतना सिंपल भी नहीं बनाता. सो पी ई बिल्कुल ठीक लग रहा था, PSRTQ. ठीक है, ये भी बहुत सही लग रहा था बाय द वे, लेकिन वो गलत था. चलो गाइज, ये तो हमने किए जंबल, वर्ड जंबल, सेंटेंस जंबलिंग, रीअरेंजमेंट, डबल फिलर वाले क्वेश्चन. अब लेट्स सॉल्व वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऑल्सो, सो दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, एंड देन कैसे फटाफट से हमें उसमें आंसर निकालने होते हैं. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या ट्रिक होती है गाइज? दिस इज व्हाट वी कॉल रिवर्स रीडिंग. व्हाट इज रिवर्स रीडिंग? आपको हमेशा याद रखना, कभी भी पैसेज से शुरू नहीं करना है, हमेशा पहले क्वेश्चंस पढ़ो, टारगेटेड अपने क्वेश्चंस को टारगेट करो, कीवर्ड्स निकालो और फिर पैसेज पढ़ो, और एक रीडिंग में आपके सारे क्वेश्चंस होने चाहिए. ठीक है, तो विल ट्राई दैट टुडे. ठीक है, ऑल ऑफ अस टुगेदर. तो सब साथ में पढ़ेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे इसको. तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन व्हाट विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो व्हाट विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग, हमें वो ढूंढना है. तो एक तो ये हमारा कीवर्ड हो गया, व्हाट विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग. सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स अलाउ और अलाउज क्विक शॉपिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो इनमें से कौन सा है जो क्विक शॉपिंग अलाउ करता है, हमें वो ढूंढना है. तो फ्यूचर ऑफ शॉपिंग, क्विक शॉपिंग. ठीक है. थर्ड है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस मेंशन्ड इन द अबव पैसेज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स. सो एडवांटेजेस हमें ढूंढनी है. व्हाट आर द एडवांटेजेस इन द मेंशन्ड इन द अबव पैसेज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर, मतलब जो दुकान होती है उसके एडवांटेजेस जो बताए हैं पैसेज में, हमें वो ढूंढने हैं. And next is, which of the following is the backbone of both digital and physical format shopping. के दोनों के बैकबोन क्या है, हमें वो एक आंसर ढूंढना है. एक हमारे यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, उसका हमें एंटोनिम ढूंढना है, अकिन का. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड अकिन विच इज गिवन इन बोल्ड. तो आप अपने कीवर्ड्स को नोट डाउन किया करो गाइज. हमें दोनों डिजिटल और फिजिकल फॉर्मेट की बैकबोन ढूंढना है, हमें एडवांटेजेस ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर ढूंढना है, हमें विच ऑफ द फॉर्मेट्स अलाउज क्विक शॉपिंग वो ढूंढना है, एंड व्हाट विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग एक हमें वो ढूंढना है. राइट, तो नाउ लेट्स रीड द पैसेज. अब देखो गाइस, इससे क्या फायदा हुआ. एक तो आपको ये पता लग रहा है इतने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कि हाँ पूरे पैसेज में क्या बात हुई होगी, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग की बात हो रही होगी पक्का. राइट, आप क्वेश्चन से ही निकाल सकते हो ये चीज, सिर्फ क्वेश्चन से, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो आपको आइडिया लग गया कि क्या जिक्र हो, अमेजोन की बात आ रही है तो पक्का ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग की बात होगी. पक्का उसमें ही कंपेयर हो रहा होगा कि कौन सा बेटर है, ऑनलाइन शॉपिंग बेटर है या ऑफलाइन बेटर है, किसके एडवांटेजेस क्या है, किसकी डिसएडवांटेजेस क्या है. तो इतना सब आप पैसेज के बारे में समझ के सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से इतना गेस कर लिया आपने, और अब आपको आपके कीवर्ड्स भी मिल गए कि मुझे फ्यूचर ऑफ शॉपिंग ढूंढना है, क्विक शॉपिंग फॉर्मेट ढूंढना है, ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर के एडवांटेजेस ढूंढने हैं, और बैकबोन ऑफ बोथ दिस फॉर्मेट्स ऑफ शॉपिंग ढूंढना है. चार मुझे कीवर्ड्स मिल गए. अब जो देखना, मैं एक बार एक ही रीडिंग में हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे. लेकिन अगर आप उल्टा करते हो ना, रिवर्स रीडिंग अगर आप नहीं करते, आप पहले पैसेज पढ़ते हो, तो क्या होता है गाइज. गाइज आपने ये चीज नोटिस की है, अब आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ सुनना जाने से पहले, दिस में हेल्प यू यू नो अ लॉट. ध्यान से सुनना प्लीज इसको. गाइज आपने नोटिस किया है कि मोस्टली 99.9% ऑफ द टाइम्स इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन 99.9% ऑफ द टाइम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है. नोटिस किया आपने, एक पिक्यूलियर सी चीज है. फर्स्ट क्वेश्चन 99% ऑफ द टाइम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है. क्यों होता है गाइस? अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है. अब आपको अब पता है वो क्या देखना चाह रहा है, वही वो यही टेस्ट कर रहे हैं कि कौन बच्चा. यस गाइस, डू यू एग्री विद मी और नॉट? हैव यू नोटिस दिस?
कि पहला क्वेश्चन 99% ऑफ द टाइम्स आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, राइट। तो वो क्यों होता है, देखो जो अपने अपने क्वेश्चंस को स्ट्रेटेजाइज नहीं करेगा, जो सीधा आंख बंद करके पहले क्वेश्चन से शुरू कर देगा, वहां पे प्रॉब्लम क्या है, टाइम क्रंच है। आपने फॉर एग्जांपल आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू कर दिया, राइट, आपने पढ़ना शुरू किया पैसेज, फिर क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ के फिर अपने पैसेज पढ़ा, अपने आंसर ढूंढे एक एक करके, और लेट्स से आपने आपने 20 मिनट देने थे इंग्लिश को और आपने उसमें से 8 या 9 मिनट इस चीज में लगा दिए। तो जब आप कॉम्प्रिहेंशन करके निकलोगे आपको पता चलेगा यार क्वेश्चन तो मेरे 5 या 6 ही हुए हैं और टाइम मेरा आधा निकल चुका है। नाउ यू विल स्टार्ट पैनिकिंग, और वो पैनिक के चक्कर में जल्दीबाजी में क्वेश्चंस गलत होते हैं और वही वो करवाना चाहता है आपसे। तो ये चीज़, ये साइकोलॉजी है जो एग्जामिनर की है, जो आप नहीं समझते शायद कभी कभी। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आंख बंद करके पहले से शुरू मत करो। आपका जो पेपर होना चाहिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर या एलिवेटिंग ऑर्डर क्या है, मतलब पहले हमेशा छोटे क्वेश्चंस करो, ठीक है। जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सिंगल फिलर हो गया, डबल फिलर्स हो गए, या जो हमने अभी किए ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट या वर्ड रीअरेंजमेंट, ये वाले जो क्वेश्चन है ये पहले किया करो, बिकॉज दे आर एफिशिएंट। आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर जाओगे, तो आपने पहली 5 या 6 मिनट में आपने 7-8 क्वेश्चन कर लिए, दैट विल गिव यू द पीस ऑफ माइंड कि यार चलो काफ़ी सारा हो गया एंड अभी मेरी काफ़ी 15 मिनट बची हुई है। तो उन 15 मिनट को आप बड़े मतलब ऑर्गेनिकली यूज कर पाओगे विदाउट बीइंग अंडर प्रेशर। तो ये याद रखना, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम को बीट करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये चीज़ ऑब्जर्वेंस से समझ आती है कि हाँ यार मोस्टली हमने देखा है कि पहला क्वेश्चन होता है, सर आप में तो नहीं है, वैसे मैंने बनाया ना ये पेपर तो बैठ के आपके लिए, वो अलग चीज़ है। मैं चाहता था कि हम एंड में करें ताकि शुरू में आपको उन क्वेश्चंस को करने को हेल्प मिल जाए, बट नॉर्मली आपको मोस्टली आपको कॉम्प्रिहेंशन शुरू में मिलेगा, तो उसको शुरू मत करो, उसको स्किप करो, ठीक है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये वाले क्वेश्चन एंड में करने होते हैं क्योंकि ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। द कैच इज टाइम लगता है लेकिन इनमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इनके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। जबकि दूसरे क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन है वो आप एफिशिएंटली और एक्यूरेटली बड़े कम टाइम में कर पाओगे। तो स्टार्ट विद शॉर्टर क्वेश्चंस एंड देन मूव टुवर्ड्स योर लॉन्गर क्वेश्चंस, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं गाइस अपना पैसेज एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस। तो लास्ट वीक्स न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल, पीपल नाउ स्पेंड मोर एट Amazon देन एट वॉलमार्ट। तो अच्छा, ये एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं। लास्ट वीक्स न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल, पीपल नाउ स्पेंड मोर एट Amazon देन एट वॉलमार्ट, अनाउंस दैट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलर दैट इज वॉलमार्ट हैड बीन अनसीटेड बाय द ई कॉमर्स जाइंट, कि अमेजोन ने उसको मतलब पछाड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, आई थिंक। द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टेड दैट Amazon plans to open large retail locations akin to department stores. The Wall Street Journal reported that Amazon plans to open large retail locations akin to department stores. The finer details of Amazon's planned entry to the regular retail sector, the very business that it disrupted, are not yet known. क्योंकि डिटेल्स क्या होंगे, कि क्या सुनने में आ रहा है कि पिछले हफ्ते अमेजोन ने वॉलमार्ट को मतलब अपने रेवेन्यू में पीछे छोड़ दिया है, और इस एक जर्नल में एक और रिपोर्ट आई है कि अमेजोन दुकानें खोलने जा रहा है, जैसे नॉर्मल शॉप्स होती है ऐसे अमेजोन एक शॉप खोलने जा रहा है, शॉप्स खोलने जा रहा है। द फाइनल डिटेल्स ऑफ अमेजॉन्स प्लान एंट्री टू द रेगुलर रिटेल सेक्टर, द वेरी बिजनेस दैट इट डिसरप्टेड, आर नॉट येट नोन, कि भाई डिटेल्स नहीं पता वो कब आएगा, कैसे आएंगे। But one thing is for sure, how Amazon combines its digital and brick and mortar retailing strategies will define the future of shopping. तो यही क्वेश्चन था हमारा कि how Amazon combines its digital and brick and mortar retailing strategies will define the future of shopping. मिल गया साथ साथ पहली रीडिंग में साथ साथ आंसर, ऐसे करना होता है आपको गाइस। अब जहां आपको आंसर मिला ना, अब आपको पेपर में क्या करना है, यहाँ मुझे आंसर दिखा, फटाफट क्वेश्चन पे जाओ, अपना क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दो, ठीक है। व्हाट विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग, ठीक है। अब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज बाय अमेजॉन, ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉलमार्ट, या अमेजॉन्स एंट्री टू द रेगुलर रिटेल सेक्टर। Yes guys, what do you think? What will define the future of shopping according to the passage? पूरा पढ़ना है एक बार। It is unlikely that Amazon will sell the same products in the two shopping environments. There could be a demarcation strategy as to what category of products will be sold through digital channels and what category mostly through the company's physical stores. There are several products that are bought by consumers routinely without much thinking. This is not much joy in shopping for them. So it won't be a surprise if most of this sort of shopping moves fully into the digital space, a format that allows quick shopping.
ठीक है. There are categories where the shopper would like to try out products in person before deciding to purchase them. This is particularly beneficial in the apparel category, कपड़े जैसे को हम बोलते हैं, which can often be a guessing game for customers shopping online because of the size and fit concern. True. There are also categories where personal advice from an expert on what suits the customer best can add a lot of value. Such products are best shopped for in a brick and mortar store. Big data analytics and artificial intelligence are already the backbone of both digital are already the backbone of both digital and physical format shopping. ये भी एक हमारा आंसर था कि big data analytics and artificial intelligence are already the backbone of both digital and physical format shopping. In the future, the role of technology will only get more prominent, more so in the case of online shopping. Yes, guys. So what do you say is the right answer? What will define the future of shopping according to the passage? Combination of digital and brick and mortar retailing strategies. दोनों की combination को, Amazon की entry को retail sector में ये future नहीं है. उनको जो कॉम्बिनेशन बनाएगा दोनों में, डिजिटल शॉपिंग में और ब्रिक एंड मोर्टार शॉपिंग में, वो है आगे का फ्यूचर. सो ए इज द राइट आंसर. वेरी वेल डन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स अलाउज क्विक शॉपिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज? डिजिटल शॉपिंग, रिटेल शॉपिंग, डिपार्टमेंटल शॉपिंग, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी. यस गाइस, क्विकली. क्लियरली उसने मेंशन दिया था, ये देखो, याद है ये वाला. So it won't be, there are consumers, there is not much joy of shopping for them. So there are several products that are bought by consumers routinely without much thinking. There is not much joy in shopping for them. So जो shopping जिनको पसंद नहीं है, तो it won't be a surprise if most of this sort of shopping moves fully into the digital space. So the answer here is option number A. Very well done. Digital space. Question number 28. What are the advantages mentioned in the above passage of brick and mortar stores? उनके advantages क्या है? When consumers choose a brick and mortar store, they do not need to worry about waiting, handling fees or damaged or lost packages. ये है. The return policies available at brick and mortar stores offer a more simplistic and engaging process other than their online counterparts. Both A and B. The interactive services offered at brick and mortar store help shoppers to get second opinions and more. Or all A, B and D. Yes guys. Guys, we have to answer the question only on the information that is given in the passage only. Actual में reality में क्या है doesn't matter. जो पैसेज में गिवन है वो आपको ढूंढना होता है. तो अब ये देखो यहाँ थी, देर आर कैटेगरीज वेयर द शॉपर वुड लाइक टू ट्राई आउट प्रोडक्ट्स इन पर्सन बिफोर डिसाइडिंग टू परचेज. दिस इज स्पेशली बेनिफिशियल इन अपैरल कैटेगरी. So these are also categories where personal advice from an expert on what suits the customer best can add a lot of value. So such products are best shopped for in a brick and mortar store. So अगर वो ट्राई करने की वाली बात देता ना कि वो हमें ट्राई करना है, अगर वहाँ पे होता है वो कहीं पे भी नहीं दिया है, वो इसमें ना ए में है सिंपलिस्टिक एंगेजिंग प्रोसेस देन देयर ऑनलाइन काउंटर पार्ट, नहीं वहाँ पे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. सो द करेक्ट आंसर हियर वाज ऑप्शन नंबर डी. वेरी वेल डन गाइस. जो पैसेज में इंफॉर्मेशन गिवन है लेट्स यूनाइट, उसके बेसिस पे आंसर करना होता है, नॉट व्हाट इज द रियलिटी. ठीक है. Next, which of the following is the backbone of both digital and physical format shopping? Technology and consumers, customers and artificial intelligence, data analytics and artificial intelligence, science and technology, or both A and C? ए और सी हो जाता गाइज अगर वहां पे उसने ए में कंज्यूमर्स ना दिया होता. तो ये देखना उसने लास्ट पैराग्राफ में दिया है, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर ऑलरेडी द बैकबोन ऑफ बोथ डिजिटल एंड फिजिकल फॉर्मेट शॉपिंग. इन द फ्यूचर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी विल ओनली गेट मोर प्रोमिनेंट, मोर सो इन द केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ेगा लेकिन सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग में, कंज्यूमर्स का कोई बैकबोन की यहाँ उसने बात नहीं की है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस are the backbone of both digital and physical format shopping. And last, which of the following is the antonym, opposite of the word given, akin? So your options are diverse, parallel, exact, relevant or uniform. I'll show you the sentence जहाँ पे akin use हुआ है. ये रहा हमारे पास. So the Wall Street Journal reported that Amazon plans to open large retail locations akin to department stores. ठीक है. akin to department stores, akin क्या होता है? अब इसका opposite हमें बताना है. Yes guys. Akin is similar to, right? तो parallel, exact, relevant and uniform ये सारे इसके sort of इसके synonyms हैं, लेकिन एक ही इसका antonym था diverse. Akin होता है similar चीजें और diverse होता है अलग अलग चीजें. So A was the right option.
ठीक है, तो क्विकली नाउ गिव मी योर स्कोर गाइस, फटाफट से मुझे अपना स्कोर बताओ, 30 में से कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए, राइट, सो दैट वी गेट टू नो कि आज हम अगर एग्जाम में जाते हैं तो हमें कितना स्कोर कर सकते हैं और हमें कहाँ तक। अभी हमने टाइम नहीं किया था बाय द वे, ठीक है, टाइम की अभी इसमें चैलेंज हमें इसमें ऐड नहीं किया, ठीक है, तो वो आप बाद में देख सकते हो प्रैक्टिस के टाइम पे, बट दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे। वेरी गुड नफीस, कीप इट अप, वेरी वेल डन डियर। एंड गाइज आई एम ऑल्सो गिविंग यू 10 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। पिछले सेशन में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, वो भी आई डोंट नो किसी एक दो बच्चे ने ही आंसर किया चैट बॉक्स में। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 10, ये प्रैक्टिस करो, इनके आंसर मुझे इस वीडियो के चैट बॉक्स में डालना, ठीक है, ताकि मैं उसको देख पाऊँ कि आप सही कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस। इफ यू वांट दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस you can get them from the PDF. The PDF will be available in our Telegram channel. The link for our Telegram channel has been given in the description of the video. If you are not there yet, go join it and you can find many such PDFs for free and you can get benefited. So there are 10 questions, good questions to practice from, and you can get them from the PDFs, right? Yes, akin means similar, Karthik. Similar things, similar parallel, things. So akin to something means similar to something. Yes, guys. 27 Nafis, very good. Savan 26, very good. Shantini 22, not bad. Ria 25.25, very good. Let's Unite 19, not bad. We can do better. What about the rest of you guys? अभी शेयर करना नहीं है सर, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट गाइज, कोई इशू नहीं है, इफ इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू। बट गाइज बिफोर वी रैप अप द सेशन, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड, ठीक है। आई होप दैट यू डू वेल इन द एग्जाम, यू गो प्रिपेयर्ड एंड यू हैव योर स्ट्रैटेजीज ऑन योर स्लीव्स ऑन द डी डे। सो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ ऑन द एग्जाम, एंड आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विश यू all success in your hard work and in your endeavors in future. So guys, if you wish to contact us for anything, you can call us on this number, that is 8146207241 during the office hours, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So guys, having said that, I'll take your leave for today. Thank you for your precious time. You were very receptive, you were very proactive, so keep it up, and I'm sure this will pay off in the long run. So having said that, I'll take your leave. Thank you so much once again, and happy learning to all of you guys.